Hello everyone, welcome and welcome back to Nyay Sanch. In today's video, I will be discussing HPU LLM entrance question paper 2019. तो HPU LLM एंट्रेंस का जो क्वेश्चन पेपर था 2019 में, उसके क्वेश्चंस हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन पेपर है उनका क्वालिटी थोड़ा मतलब अभी खराब हो चुका था, तो आई वाज लाइक कि थोड़ा क्लियर दिखे आपको स्क्रीन, इस वजह से मैंने वो सारे क्वेश्चंस टाइप करवा लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, a statement was issued on 3rd June 1947 that partition was the only solution to solve the problem of India. So this statement was issued by Lord Attlee, Lord Mountbatten, Lord Pettig or Lord Wavell. So the correct option is Lord Mountbatten. आप लोगों ने शायद लॉर्ड माउंटबेटन प्लान या लॉर्ड माउंटबेटन योजना सुना होगा। ठीक है, जो ब्लूप्रिंट है इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन का। ठीक है, तो ये यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जो लॉर्ड माउंटबेटन है, उन्होंने पार्टीशन से जो ये रिलेटेड स्टेटमेंट है उन्होंने इशू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रियम्बल कंटेन्स द वर्ड सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, sovereign, secular, socialist, ideal democracy, sovereign, socialist, secular, franchised republic, sovereign, socialist, secular, democratic republic. So the correct answer is option D, sovereign, socialist, secular, democratic republic. ठीक है, तो जो प्रियम्बल की स्टार्टिंग लाइन से उन्हीं में हम लोगों को ये सारे पांचों के पांचों टर्म्स जो है मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो सोवरेन और हमारा डेमोक्रेटिक और जो रिपब्लिक है, ठीक है, ये ऑलरेडी थे। सोशलिस्ट और सेक्युलर हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया है प्रियम्बल में। नेक्स्ट है, द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी इन द प्रियम्बल was in the original preamble. The word and integrity was added by the 32nd Amendment Act. The word unity was added by the 44th Amendment Act. और the word and integrity was added by the 42nd Amendment Act. तो देखो, सबसे पहली बात है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसमें सिर्फ एक एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट हुई है, वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है जी, तो सिर्फ 42nd अमेंडमेंट एक्ट के हुई है, तो हम बोल सकते हैं या ये दोनों ऑप्शन सीधे गलत है। बचा हमारे पास ये और ये। अब जो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी है इसमें, तो इसमें यूनिटी ऑलरेडी था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट एंड इंटेग्रिटी को 42nd अमेंडमेंट एक्ट के भी इंसर्ट किया गया। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. All laws that existed before the commencement of the Indian Constitution were all laws that existed before the commencement of the Constitution were declared void as they were enacted by the colonial masters, left for the courts to decide whether the laws are useful for democratic setup. Option C is Parliament had to ratify or abrogate the laws. And the last option is option D, those laws to be declared void which contravened part 3 of the Indian Constitution. So the correct answer is option D. Why? Because हमारे आर्टिकल 13 में मेंशन कर रखा है कि सिर्फ वो जो लॉज हैं जो कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, सिर्फ वो हमारे वॉइड डिक्लेयर करे जाएंगे, बाकी क्या है, रहने वाले हैं। So next is question number 5. Article 19 does not guarantee the following right: to reside and settle in any part of India, to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business, to acquire, hold and dispose property, and last is all of the above. So the correct option is option C, that is to acquire, hold and dispose of property. देखो, ये दोनों rights हमारे आर्टिकल 19 में है, ये भी है, but one which is not there is property वाला right. क्यों? क्योंकि अब ये हमारा fundamental right नहीं है, because article 19 is what? It's a fundamental right. अब क्या है, हमारा 300A है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ही दे रखा है। पहले हमारा कहाँ पे होता था, ये 19F में। ठीक है, अब 19F में से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, 19F में नहीं मिलता है अब, हम ये पहले था हमारा फंडामेंटल राइट, बट अब इसको मेयरली एक क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है।
ठीक है जी, यहाँ से इसको ओमिट कर दिया और हमारा अब ये आर्टिकल 300A जो है वहां पे हम इसको हमें ये मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, अच्छा बाकी अगर ये देखिए हम लोग, हमारा ये 300A आता है कौन सी, ये चैप्टर 4 में आता है। ठीक है, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा पार्ट 12 का चैप्टर 4 है उसमें 300A हमारा आता है। ठीक है, और ये किस अमेंडमेंट के विया इंसर्ट किया गया, ये 44th अमेंडमेंट के विया। ठीक है, 44th जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, 1978 का, याद रखना है 1978 का 44th अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ से ओमिट करके इसको यहाँ डाल दिया राइट टू प्रॉपर्टी को। ठीक है, और अभी ये हमारा मेयरली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन deals with rights of the accused and guarantee inter alia, ex post facto laws, preventive detention, right to legal aid और all of the above। तो देखो आर्टिकल 20 में all of the above, तो ये वाला ऑप्शन तो सीधा गया, क्यों, क्योंकि राइट टू लीगल एड तो नहीं है इसमें, ये 39A में है, प्रिवेंटिव डिटेंशन 22 में है, एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है, लॉज 21 में। ठीक है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1, सो द करेक्ट आंसर इज ए, राइट है अक्यूज्ड का। ठीक है, एंड दिस इज अ गारंटीड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारा है, देखो एक्सपोज फैक्टो लॉज कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो जब भी किसी ने मान लो फॉर एग्जांपल एक ऑफेंस कमिट करे, तो जो भी इस टाइम पे लॉ है ये उसी के एज पर पनिश होगा। अगर सब्सिक्वेंटली मान लो 2020 में इसने ऑफेंस कमिट करा और 2021 में एक नया लॉ आ जाता है इसी के कंटेक्स्ट में, हायर पनिशमेंट, हायर पेनल्टी लग जाता है। ठीक है, तो इसको ये गवर्न नहीं करेगा, उसको क्या यही वाला लॉ गवर्न करेगा जो 2020 में था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 21 गॉट इट्स कंटेंट एंड शेप फ्रॉम द डिसीजन इन विच केस, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओघड़। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द एक्सप्रेशन माइनॉरिटी it was held by apex court shall be determined on the basis of the state and not on the whole nation. The constitution bench decided this issue in which of the famous cases, TMA Pi Foundation versus State of Karnataka, Islamic Academy versus State of Karnataka, PA Inamda versus State of Maharashtra, Christian Medical College Vellore versus Union of India. So the correct answer is option A. Next is Article 51A mandates to have a compassion for living creatures, to vote in every election, or to keep surrounding clean, and last option is option D. So the correct answer is to have compassion for living creatures. ठीक है, option A is the correct answer. Next we have is to be able to qualify for election of a president of India, the person shall be of what age? 30 साल, above voting right, voting age मतलब कितना 18 plus, 35 ये none of this. So the correct answer is option C, that is 35 years of age. Question number 11, pardoning power of the president is absolute, based on constitutional laid down restrictions, subject to judicial review, or none of the above. So the correct answer is option C, it is subject to judicial review. Next is question number 12. 12 members to be nominated to the Council of States by the President shall have special knowledge or practical experience in law and are eminent jurists, practical ground experience and representatives of regional parties, special knowledge or practical experience in literature, science, art and social service, members of SCs, STs. So the correct answer is option C. ठीक है, तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें पता चलता है आर्टिकल 80 के क्लॉज 3 में हम लोगों को इस चीज का जिक्र मिलता है। हालांकि इसमें लॉ मेंशन नहीं कर रखा है, उसमें सिर्फ ये 4 चीजें मेंशन कर रखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स? मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, a bill pending in parliament shall not lapse by reason of the prorogation of the houses,
A bill pending in Council of States which has not been passed by the House of the People shall not lapse on a dissolution of the House of the People. A bill shall not be deemed to be a money bill by reason only that it provides for imposition of fine. So the correct option here is option A, that it shall be introduced in the Council of States. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है आर्टिकल 124 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन A citizen of India who is also, in the opinion of the President, a distinguished jurist may be appointed as the judge of the Supreme Court. How many times have judges been appointed under this provision? तो कभी नहीं अपॉइंट किए गए, ठीक है, अभी तक तो ये जनरल नॉलेज के बेसिस पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, बिकॉज बेयर एक्ट में कभी नहीं मेंशन करा होगा ये सब चीजें. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोक्लेम्स law declared by Supreme Court to be binding on all courts, the Supreme Court to be a court of record, all authorities, civil and judicial officers to act in aid of Supreme Court. The Supreme Court may pass any decree or order as is necessary for doing complete justice. So the correct answer here is option D. ठीक है, the Supreme Court may pass any decree or order as is necessary for doing complete justice. ठीक है. Next है question number 16. The Constitution of India has a number of schedules appended to it. The number of schedules are 9, 10, 12 or none of the above. So the correct option is option C. 12 शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. Next question है the following statements concern the recently introduced goods and services tax. Which of the statement is true? Legislature of every state has absolute and exclusive power to make laws with respect to GS, okay, goods and services. A parliament has the exclusive power to make laws with respect to GST, where the supply of goods or services or both take place in the course of interstate trade or commerce. Option C is the goods services tax, that is GST, is levied on petroleum crude and natural gas or all of the above. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है, तो इस पे लेवी नहीं होता भाई जो टैक्स है, तो ये तो होगा ही नहीं अगर ये नहीं है. और बाकी स्टेट के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है भाई, ठीक है, कि वो गुड्स एंड सर्विसेज के कंटेक्स्ट में रिस्पेक्ट में लॉज बनाए. स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट हैव एब्सोल्यूट एंड एक्सक्लूसिव पावर. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 18. तो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करा ही था आर्टिकल 300A के बारे में, और अभी वही और आ गया कि आर्टिकल 300A गिव्स राइट टू प्रॉपर्टी. The placing of the right means that shift of the right to property from a fundamental right to a constitutionally recognized legal right. Right will be available against executive interference. It will not be available against legislative interference. All of the above. So the correct answer option is answer option A. Next question is question number 19. The doctrine of basic structure of the Constitution is delineated in the Constitution. It was a judicial creation. It was a creation of authoritative text on Constitution. It was a British legacy. So it was a judicial creation. Question number 20. Proclamation of emergency under Section 352 may be made if the President is satisfied that the security of India or any part of it is threatened by war, external aggression or armed rebellion, war, external aggression or internal disturbances, war, internal disturbance or external aggression, war, internal disturbance or armed rebellion. So the correct option is option A, war, external aggression or armed rebellion. तो पहले एक्चुअली होता क्या था कि जो हमारा ये होता था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, बट अभी क्या है, आर्म्ड रिबेलियन कर दिया है इसको. ये दोनों सेम है, ये इसको अभी आर्म्ड रिबेलियन कर रखा है पिछले से. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21. ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश jurisprudence. जॉन ऑस्टिन, जेरेमी बेंथन, लॉन फुलर, गस्टव रेडब्रच. सो द करेक्ट आंसर इज जॉन ऑस्टिन.
ठीक है, कई जगह आप पढ़ेंगे जेरेमी बेंथम भी है, बट इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की जब हम बात करते हैं, जॉन ऑस्टिन इज द फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। Question number 22. The proper end of every law is the promotion of the greatest happiness of the greatest number. This principle of utility is discussed in Early History of Institutions, Introduction to the Principles of Morals and Morals and Legislation, Introduction of Legal Theory, Grammar of Politics. So the correct answer is Introduction to the Principles of Morals and Legislations. देखो अगर आप देखेंगे अभी जूरिस्प्रूडेंस, चाहे आपका वो जो सिलेबस है जो एचपीयू बोल रहा है कि ये सिलेबस है, उसमें मेंशन नहीं कर रखा, बट ये आपको मिल गए जूरिस के क्वेश्चंस। तो देखो 20 क्वेश्चंस तो यहाँ में कॉन्स्टिट्यूशन में से ही आए हैं, और अभी जो आगे के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं ये जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज आइडेंटिफाइड विद हंस केल्सन, एच.एल.ए. हार्ट, सेवेजनी, रॉस्को पाउंड. सो द करेक्ट आंसर हियर इज हंस केल्सन. ठीक है, which of the following is correct? Validity of each norm is dependent on a higher norm. Grund norm cannot depend on any other norm, it must be presupposed. Validity of all norms is ultimately based on the Grund norm. All of the above. So the correct option is all of the above. ठीक है, तो ये वाला जो कंसेप्ट है कि वैलिडिटी ऑफ ईच नॉर्म इज डिपेंडेंट ऑन अ हायर नॉर्म, ग्रंड नॉर्म किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, और सारे नॉर्म्स का जो वैलिडिटी है वो ग्रंड नॉर्म पे बेस्ड है, तो सारे सही हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. रूल ऑफ एडजस्टम जनरस मीन्स when one thing is specifically mentioned, it implies other similar things are included by application. When general words are used in a summary manner, they should be taken as referring to those kind of things with which the context deals explicitly or implicitly. Omission in a statute cannot, as a general rule, be supplied by construction. Lastly, the thing speaks for itself. ठीक है, तो the correct answer is option B. The thing speaks for itself में कौन सा आता है? रेस इस पर लिख इट अप. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26. Theory of punishment has been propounded to justify ends of criminal justice and punishment. ठीक है, so which theory is correct? Deterrent, preventive and punitive, reformative और all of the above. तो सारी theories क्या हैं? Criminal justice के जो एंड्स हैं उन्हीं को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है, पनिशमेंट को जस्टिफाई करने के लिए बनाई गई हैं. नेक्स्ट है हमारा फ्यू रिलेशनशिप्स आर एज वाइटल टू मैन एज दैट ऑफ पोजेशन एंड वी मे एक्सपेक्ट एनी सिस्टम ऑफ लॉ हाउएवर प्रिमिटिव टू प्रोवाइड रूल्स फॉर इट्स प्रोटेक्शन. दीज वर्ड्स आर एट्रीब्यूटेड टू सेवेजनी, Salmon, Holland or none of the above. So the correct answer is option B, Salmon. Question number 28. There are many advantages of incorporation, which inter alia includes limited liability, perpetual succession, corporate personality, all of the above. तो हम लोगों ने देखा 20 क्वेश्चन सो फार कॉन्स्टिट्यूशन के थे और 7 जूरिस के थे, और अभी हमारा बिजनेस लॉ शुरू हो गया. तो एडवांटेजेस क्या है इनकॉर्पोरेशन के? Limited liability, perpetual succession, corporate personality, and D is the correct answer. Next is question number 29. Ratio decidendi means let the decision stand in its rightful place, reason of the decision, statement of a judge which is non-binding. When the reason for any particular law ceases, so does the law itself. So the correct answer is option B, reason of the decision. Statement of a judge which is not binding is actually a bitter dicta. ठीक है, जो ओपन कोर्ट में कुछ भी जो जज बोल दे, मान लो कोई भी स्टेटमेंट पास करता है और वो नॉन बाइंडिंग नेचर का होता है, वो होता है बिटर डिक्टा. नेक्स्ट है हमारा पर इंक्यूरियम. देखो बहुत सारे ऐसे लीगल डॉक्ट्रिन से मैक्सिम्स भी पूछे गए हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर में. पर इंक्यूरियम refers to judgment without reference to statutory material or earlier judgment. Second is judgment conforming to interest of justice. Third is judgment given by
including extra legal arguments, and lastly judgment given based on equity and good conscience. देखो तो पर incurium की अगर हम लोग बात करें, it means lack of care या फिर inadvertently, है ना, गलती से, ठीक है, ध्यान ही नहीं दिया. तो judgment passed without reference to a statutory material or other judgment is obviously per incurium. जैसे यहाँ पे तो कंफर्म कर ही रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा लीगल आर्ग्यूमेंट्स को इंक्लूड करके जजमेंट दे दिया, यहाँ इनके बेसिस पे दे दिया, तो लैक कर है विदाउट आ गया हमारे पास, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है. नेक्स्ट इज question number 31. The complete offense is not punishable and only attempt is punishable. Robbery, culpable homicide not amounting to murder, suicide, dacoity. So the correct answer is suicide. तो कंप्लीट ऑफेंस है वो पनिशेबल नहीं है, बिकॉज जब मरी गया फिर कैसे पनिशमेंट दोगे आप, ठीक है. सुसाइड अगर कमिट हो जाए तो इसका मतलब इंसान खत्म, राइट. तो फिर तो आप कैसे पनिश करोगे. सिर्फ अटेम्प्ट पनिशेबल है, वो क्या है, अगर आप अटेम्प्ट टू सुसाइड वो पनिशेबल है, ठीक है. तो आंसर इज सुसाइड, सिर्फ अटेम्प्ट पनिशेबल है, ठीक है. इसमें और ऐसा ऑफेंस क्या है जो कंप्लीट ऑफेंस तो पनिशेबल है ही और उसका अटेम्प्ट भी पनिशेबल है, ठीक है. सबके अटेम्प्ट पनिशेबल है, हाँ ऐसा है. नेक्स्ट इज कुछ का प्रेपरेशन भी हमारा, चलो अटेम्प्ट तो हम लोगों ने देख लिया, अटेम्प्ट पनिशेबल है, कमीशन कमिट कर दिया पनिशेबल है, बट ऐसा कोई ऑफेंस है जिसमें अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो भी आपका पनिशेबल है, तो वो क्या है, डेकॉइटी, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, which deals with that IPC provides for capital punishment for various offences. Take the option where it is not provided. तो capital मतलब डेथ पेनाल्टी देता है IPC बहुत सारे ऑफेंसेस में. देखो अभी ऐसे इग्नोर मत करना कि अभी तो भाई BNS आ गया है, नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं, तो अभी हम पुराने क्यों पढ़े. कंसेप्ट चेंज नहीं हुए हैं, सेक्शंस के नंबर बदले हैं, हाँ थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हुए हैं कंसेप्ट में, मैं ये नहीं बोलूंगी सब कुछ ही सेम है, देयर आर डिफरेंसेस, बट अब इसमें तो यू कैन नॉट से कि कुछ ऐसा डिफरेंस हुआ है, राइट. तो ध्यान रखना है कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स में IPC वाला जो CRPC वाला या एविडेंस वाला एरिया उसको कंप्लीटली इग्नोर मत करो, ठीक है. गो थ्रू देम एज वेल. तो करेक्ट मर्डर, परजुरी resulting in the conviction and death of an innocent person, dacoity, kidnapping for ransom. So the correct answer is dacoity. dacoity में देखो आपका डेथ पेनल्टी नहीं दे रखा है, मर्डर यहाँ पे डेथ हो रहा है, ये किडनैप कर रहे हैं फॉर रैंसम, तो बचा क्या, सिर्फ dacoity, ठीक है. ये ऐसा ऑफेंस है, बाकी सब में आपका डेथ पेनल्टी है, कैपिटल पनिशमेंट दे रखा है. Question number 33. The constitutional validity and contours of capital punishment were considered in the following cases. However, one case did not mention, one case mentioned did not deal with it. Take the odd one out. The constitutional validity and contours of capital punishment. तो capital punishment के बारे में है, पर कौन सा इनमें से नहीं है. तो एक केस है हमारे पास बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दूसरा है हमारे पास राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तीसरा है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एंड लास्ट इज ओम हेमराज राजनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. तो देखो ये जितने भी केसेस है ना, ये सब कैपिटल पनिशमेंट के और ये सब लैंडमार्क केसेस है इसके फील्ड में. सिर्फ जो ऑप्शन डी है हमारा ओम हेमराजानी वाला केस, ठीक है, ये हमारा इस कंसेप्ट के साथ डील नहीं करता. दिस इज द ऑड वन आउट. Question number 34. Inchoate offences relates to offences which are grave in nature. Mandatory minimum is prescribed. ठीक है. Incomplete offences, strict liability offences. So the correct option is option C. ठीक है. Inchoate मतलब incomplete offences. Next हमारा है unlawful assembly must have the following to be designated such. As such, ठीक है. तो कब बोलेंगे हम unlawful assembly? तो बेसिकली इसके ingredients पूछ रहे हैं. Common intention, joint criminal enterprise, common object, common intention, common object. So the correct answer is common object. Common intent नहीं होता है, ठीक है. unlawful assembly का बेशक ना हो intention, common object होता है. इनमें difference क्या है? Please find that out.
बाकी अभी इसके लिए तो इतना नेसेसरी नहीं है एंट्रेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 इज द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी एंड नॉट अ सब्सटैंटिव ऑफेंस। तो ये मेरली प्रिंसिपल है, कोई सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं है। 34, 120A, 149 एंड 107। तो 34 ये किसके बारे में बताता है? जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये मेरली एक प्रिंसिपल है, ठीक है, कोई ऑफेंस नहीं है विद इन इटसेल्फ और बाय इटसेल्फ। बिकॉज ये क्या है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, ये अनलॉफुल असेंबली का है, ये हमारा 107 अबेटमेंट का है, मतलब थे ये सब, ठीक है। अब तो आईपीसी के नेक्स्ट है हमारा द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्शियल डिफेंस बट अ कंप्लीट डिफेंस, ठीक है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, सडन फाइट, कंसेंट और प्राइवेट डिफेंस। So this is not a partial but a complete defense. This is what private defenses की जो आते हैं, ये सब चीजें क्या है, ये partial defenses हैं, आपको प्रूव करनी पड़ेगी। जो private defenses की कैटेगरी में वो क्या है, complete defenses हैं। Next we have is question number 38. Following offenses are compoundable under section 320 CRPC. Take the correct one, incorrect one out. तो कौन से नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है वो बेसिकली ये पूछ रहे हैं। 498 IPC, 323 IPC, 379 IPC, 448 IPC. So the correct answer is 498 IPC, ठीक है। क्योंकि जो क्रुएलिटी वाला है ना, ये क्या है, ये नॉन कंपाउंडेबल है, ठीक है जी। सॉरी, फॉलोइंग ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल, तो इनकरेक्ट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। हम ये हर्ट, थेफ्ट, ट्रेसपास, ये सब क्या है, कंपाउंडेबल नेचर के है, बट क्रुएलिटी को आप कंपाउंड नहीं कर सकते हैं। मैरिटल रेप एक्सेप्शन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ वाइफ अंडर 15, अंडर 21, अंडर 18, नॉन ऑफ द अबव। सो वाइफ अंडर 18 मैरिटल रेप एक्सेप्शन इज नॉट अवेलेबल। तो मैरिटल रेप का जो एक्सेप्शन है, अगर वाइफ 18 साल से छोटी है ना, तो ये एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है। Question number 40. The following case is dealt with section 377 of IPC. Strike out the one which did not deal with the section. Naz Foundation versus Government of Entity of Delhi, Independent Thought versus Union of India, Suresh Kumar Kaushal versus Naz Foundation, Navtej Johar versus Union of India. So the correct answer is option B. ठीक है, तो this is the one which does not deal with section 377. Next is the accused Santokh Singh had given false evidence against Izhar Hussain by falsely identifying him in an identification parade. What is the liability of Santokh Singh? So he is liable under section 511 IPC, or he is not liable, or liable under 193 IPC, or none of the above. So the correct answer is 193 IPC, option C. Question number 42. The ingredients of section 304B IPC are as enumerated below. Tick the wrong one. Death within 7 years of marriage, unnatural death, not specifically related to dowry, cruelty by husband or relatives. So the correct option is not specifically related to dowry. Next we have is question number 43. Shreya Singhal versus Union of India held the following section unconstitutional. 303, 499 of IPC, or 66A of IT Act, or 65 of IT Act. So the correct answer is 66A of the IT Act. Question number 44. Ankur Maruti Shinde versus State of Maharashtra case is example of wrongful prosecution, wrongful confinement, inhuman and degrading treatment, epistolary jurisdiction. So the correct answer is wrongful prosecution. Next we have is question number 45. The Parliament enacted subsection 4 to section 46 CRPC for the following: children below 18 to be tried by the juvenile boards,
to impose legal duty on the occupier to afford to the police all facilities for making arrest. The person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary. No women shall be arrested after sunset or before sunrise. So the correct answer is option D. Next is question 46. Following are the cardinal principles of a fair trial. Take out the one which is not. Presumption of innocence, evidence to be taken in front of the accused, burden of proof on a preponderance of probability, reasoned decision. So the correct answer is option C. Because हम जब fair trial की बात करते हैं तो mere preponderance is not acceptable. ठीक है, it has to be proved beyond reasonable doubt. ठीक है, देखो दो टर्म्स है, एक था mere preponderance और एक होता है beyond reasonable doubt. ठीक है, तो सिविल केसेस में mere preponderance of evidence is enough. ठीक है, और क्रिमिनल में beyond reasonable doubt आपको प्रूव करना होता है. Lalita Kumari versus State of UP dealt with the following issue. Question number 47. Registration of first information report, narco analysis, voice sample of the accused, last is joinder of charges. So the correct answer is registration of FIR. Question number 48. Which of the following statement is true? Court of Sessions cannot take cognizance of offence exclusively triable by a court of session without committal. All criminal cases are to be tried in camera. Confession before a police officer is admissible. Every arrestee has a right to bail. So the correct option is option C. Next we have is, sorry, the correct answer is option A, not C. Because court of session cannot take cognizance of offences exclusively triable by courts of session without committal. ठीक है, this is true because this is क्या, because ये भी untrue है but ये negative उसमें, तो this is true. सारे क्रिमिनल केसेस को कैमरा में तो नहीं ट्राई किया जाता है, और कन्फेशन है बिफोर अ पुलिस ऑफिसर, दैट इज आल्सो नॉट एडमिसिबल, और हर अरेस्टी के पास राइट टू बेल नहीं होता है. ठीक है, there are exceptions to it. Question number 49. Take the correct statement. Anticipatory bail means that there is a bail without an arrest. Second, it is defined under section 438. Only on arrest that the order granting anticipatory bail becomes operative. Issuance of summons does not entitle an accused to apply for an anticipatory bail. So the correct answer is option A. ठीक है, it's a bail without arrest. Question number 50. Take out the incorrect statement. Section 357 CRPC empowers the court to grant compensation. Power of magistrate or judge to grant compensation under section 357 subsection 3 is discretionary. Section 357A deals with victim compensation scheme. If compensation, however inadequate, is given under section 357, no compensation to be given under 357A. So the correct answer here is option D. Next is question number 51. The concept of originality in copyright relates to. तो यहाँ तक हमारे सारी क्रिमिनल लॉज के हो गए. ठीक है, ये मिक्स्ड क्वेश्चंस पूछे गए हमसे. अभी हम लोग 51 से आ जाते हैं. अभी हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो लॉ है उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, IPR लॉ से. तो concept of originality in copyright relates to originality of expression of ideas, originality of ideas, consumer's interest, definition of originality given under section 13 of the Copyright Act. So the correct answer here is originality of expression of ideas. ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शंस में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आइडियाज ओरिजिनल होने चाहिए या उन आइडियाज को जैसे एक्सप्रेस करा है वो ओरिजिनल होना चाहिए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. तो सो फार हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, बिजनेस और अपना क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चंस देख लिए, और जो IPR है इसको भी हम लोग बिजनेस में काउंट करेंगे. ठीक है, बाकी मतलब एज पर जो 5 उन्होंने मेन दिया उस हिसाब से हम उसी में काउंट करेंगे. बट मैं आपको टोटल 10 वो बताऊंगी, 10 जो मेन 7 से 10 एक्चुअली मेन
सब्जेक्ट एरियाज जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और काफी आते हैं, ठीक है। जैसे IPR है ना, इसमें से तो खुद ही लाइक काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी बिजनेस में हम सारे लॉस ले लेंगे, चाहे वो कंपनी हो, अब वो अपना ये सोगा हो, पार्टनरशिप हो, LLP हो, ठीक है। वील डिस्कस देम लेटर। हमारा NI एक्ट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। तो बाकी हम वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेटेंटेबल? डिस्कवरी ऑफ एनी लिविंग थिंग, of natural gas or mineral, of a flour mill provided with sieving, of combiflam, ठीक है। पैरासिटामोल, antipyretic plus progen analgesic. So the correct answer here is a flour mill provided with sieving, because ये exceptions है, इनके discovery is not patentable. और ये भी नेक्स्ट इज EBC जिसको बोलते हैं, ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस DB मोदक लाल हेड एज फॉलोज, ठीक है। इनकरेक्ट क्या है? जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आर इन द पब्लिक डोमेन, जजमेंट पब्लिकेशन डज नॉट इन्फ्रिंज कॉपीराइट, judgment reproduction infringes copyright, photocopying the judgment does not infringe copyright. So the correct option here is C, judgment reproduction infringes copyright, ठीक है। This is incorrect. This has not been held by this particular case. Next है in Cadila Healthcare versus Cadila Pharmaceutical Limited, the apex court identified the following order to decide an action of passing off on the basis of unregistered trademark: the nature of goods for which they are used as trademarks, the class of purchasers who are likely to buy goods bearing the marks, the method of purchasing the goods or placing orders, ठीक है, or all of the above. So the correct answer here is all of the above, option B. Next is question number 55. Take out the incorrect statement. Like trademarks, geographical indications are regulated locally by each country. Geographical indication is created. It is a common property for the producers of the specific region. Licensing is generally not allowed in GIs. So this is correct. This as well is correct, and this is also correct. It is not created. Okay, so this is the incorrect option. Next है हमारा question number 56. The following remedy is available against infringement of copyright: civil, criminal, administration, or all of the above. So the answer is all of the above, option D. Question number 57. The defendants, an English company and their two directors. An English company and their two directors are the defendants, ठीक है? Were the UK agents of the plaintiffs, German manufacturers of frequency converter for computers. The plaintiff claimed that the defendants were in secret communication with other German manufacturers and were giving them secret information. The plaintiff started proceedings seeking an injunction to restrain copyright infringement over it. The injunction was granted, but the order of inspection and removal was refused. This order is known as, so this order of inspection and removal is known as Anton Pillar orders. तो जितना भी ये हमारा मिरांडा ऑर्डर्स है या नगोआ ऑर्डर्स है, वर्क हार्डेड ऑर्डर्स है, ये सारे क्या है, इनके जो भी मतलब है ना वो समझ लेना, बिकॉज आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ इंस्पेक्शन एंड रिमूवल, एंटन पिलर ऑर्डर्स। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58. The following is fair use in respect of copyright material: teaching and research, criticism and parody, no significant effect on market, all of the above. So the correct option is option D, all of the above. ये किस में से आए? कॉपीराइट एक्ट में से आ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अभी ये पेटेंट एक्ट का आ गया हमारा, IPR का। पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट गिवन बाय द सोवरेन फॉर एन इन्वेंशन. The patent has the following characteristics: monopoly right, for unlimited period, positive right, global right. So it is a monopoly right. Only the first one is correct. Okay, it's not for unlimited period. It is for a limited period of 20 years. Okay, ji. Question number 60. Trade secrets may take many forms. The legal requirements of trade secrets, apart from the fundamental secrecy requirement, is that the owner must have taken reasonable steps to keep it secret. It may not have commercial value. Trade secret must be registered. Last is it is territorial.
So the correct answer is that honor must have taken reasonable steps to keep it secret. किस में से आ रहा है ये? ट्रेड सीक्रेट्स. ठीक है जी. Next is question number 61. The concept of assimilative practice has been replaced by precautionary principle, intergenerational equity, anthropocentrism, public trust doctrine. So the correct answer is precautionary principle. अब मैं आंसर like questions का detailed explanation नहीं दूंगी because it's gonna consume very much of your time. तो quickly I'll be discussing. It's up to you कि आप लोग इन सब concepts को जितने भी terms use करें so far, जितने भी concepts हम लोगों ने discuss करे, हर option को भी डिटेल में समझो. For example, अगर question number 62 है कि जस्टिस कृष्ण अय्यर ने हेल्ड करा कि जो CRPC है वो ऑपरेट करती है अगेंस्ट स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड अदर रिगार्डलेस ऑफ द कैश इन देयर कॉफर्स. तो कितना पैसा है उस बेसिस पे नहीं वो करती है, हर स्टैट्यूटरी बॉडी या बाकी जो भी है हर किसी के ऊपर अप्लाई करता है CRPC रिगार्डलेस ऑफ द कैश इन देयर कॉफर्स. So this was held in which case? ठीक है. So Indian Council for Enviro Legal Action versus Union of India, State of MP versus Kedia Leather and Liquor Limited, Ratlam Municipality versus Worthichan, and lastly Vellore Citizens Welfare Forum versus Union of India. So the correct answer is option C, Ratlam Municipality versus Worthichan. तो इसमें भी आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो ये साथ में जितने ये एक्ट केस लॉस है ये इनमें क्या क्या हेल्ड हो रखा है उन सब चीजों से भी गो थ्रू करें. ठीक है. Question number 63. The following is a principle of sustainable development: intergenerational equity, polluter pays principle, precautionary principle, or all of the above. Correct answer is option D, all of the above. Question number 64. The right to live in pollution-free environment is treated as part of the fundamental right enshrined under Article 14, 19, 21 or 32. The correct answer is option C, 21. Next is question number 65. Strike out the incorrect statement. A is NGT replaced the earlier existing National Environment Tribunal. Tribunal functions under the Supreme Court. It has jurisdiction over all civil cases relating to environment and order relief and compensation to victims of pollution and other environment damages. Like the Supreme Court, it is located in Delhi. So the correct statements as per the question asked, that is the incorrect out of these four statements is option B, कि tribunal Supreme Court के अंदर function करता है, which is not true. ठीक है. Next is question number 66. Relevant sustainable development goals related to environment. SDG 12, 13, 15. तो कौन से हैं? सारे के सारे. ठीक है. All of the above. Option D. Next is question number 67. In the Narmada Bachao Andolan versus Union of India, AIR 2000, Supreme Court 3751, the following judge gave a dissenting note. Justice Anand, Justice Kirpal, Justice Bharuja, none of the above. So the correct answer is option C. Question number 68. Environment Impact Assessment examines how many cases will be generated in courts related to new environment legislations, the feasibility of an environmental project, the consequences of projects and plans, predicts future changes at different levels, and lastly, cost factor of a project. So the correct option is option C, the consequences of a project. Question number 69. UCC versus Union of India, Union Carbide Corporation. This particular case dealt with oleum gas leak, Bhopal gas leak, Tughlaqabad gas leak, Amravati gas leak. So the correct answer is Bhopal gas leak. Because oleum के साथ अगर हम बात करते हैं तो श्री राम फर्टिलाइजर वाला जो केस था वो था ये. ठीक है. oleum gas leak वाला अपना इसको MC मेहता वाला भी है. ठीक है. ये MC मेहता केस भी है, श्रीराम फर्टिलाइजर केस भी बोलते हैं इसको, ऑलियम गैस लीक भी बोलते हैं. यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भोपाल गैस लीक केस है. ठीक है जी.
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 70, कन्वेंशन इन 1975 रेंडर्स द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स। तो अगर आप इन्वायरमेंट के कुछ कन्वेंशंस देखेंगे, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ठीक है, देखेंगे अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो उसमें से ये रामसर कन्वेंशन एक है, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन किसके साथ डील करती है? वेटलैंड्स के साथ, ठीक है। और ये वाले भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, ये किस किस कंसेप्ट के साथ डील करते हैं शॉर्ट में देख लेना, ठीक है, बहुत छोटी छोटी कंसाइज चीजें हैं ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, द कंपनीज एक्ट 2013 introduced trustship model of corporate social responsibility, mandatory model, optional model और voluntary model. So the correct answer is mandatory model. इन्होंने क्या जो ये CSR है इसको मैंडेटरी कर दिया। किन के लिए मैंडेटरी करा वो पढ़ लेना, कितना जिसका टर्नओवर होना चाहिए या जो नेट एसेट्स एनुअल टर्नओवर या जितना उनका नेट वैल्यू है एसेट का, वो सब चीज़ों कितना क्राइटेरिया दे रखा है करोड़ों में, वो देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सही बात बोल रहे हैं, agreement is every promise and every set of promises forming consideration for each other। ये भी सही बात बोल रहे हैं। A proposal when accepted becomes promise, बिल्कुल बन जाता है। Every agreement is a contract। So not every agreement is a contract, only agreement enforceable by law is a contract। So this is incorrect. This is incorrect. Question number 73. A company offered to pay ₹100 to anyone who contracts the increasing epidemic influenza caused by taking cold after having used the ball. According to printed direction, it was added that ₹1,000 is deposited in Punjab and Sindh Bank to show our sincerity in the matter. You used that ball as specified but still suffered from influenza. We are not entitled to the money as the contract is not made with all the world. We are not entitled to the money as it was just a puffing advertisement. You are entitled to recover the promised award as conditions were fulfilled and it was a general offer. ठीक है, you are not entitled to recover the award because as you had not communicated your intention to accept it. So since it was a general offer, you are entitled. Okay. Question number 74. The plaintiff's marriage was proposed with the daughter of one G, and in consideration of this intended marriage, G and the plaintiff's father entered into an written agreement, by which it was agreed that each would pay the plaintiff a sum of money. G failed to do so and plaintiff sued his executor. He was not allowed to sue on the following doctrine. So the first one is animus contrahendi, ठीक है, यहाँ स्पेस आएगा। D futuro, favor contractus, last is privity of contract, which is the correct option. Next is question number 75. If a minor enters into an agreement, it will be void. मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 76. A spiritual advisor, guru, induced the plaintiff, his devotee, to give him the whole of his property to secure benefit to his soul in the next world. It is not a valid contract since the contract is inadequate under spiritual influence, against scientific temper, under undue influence. So this is not a valid contract because it is under undue influence. ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77. The measure of damage caused by breach of contract is governed by some fundamental principles. Damages are penal, mental pain and suffering to be accounted for. Damages may be remote. Damages are compensatory. So correct is option D. Next, we have question number 78. Salient features of the LLP Act 2008 enumerated below. Take the incorrect one. Okay. So LLP is a body corporate
and therefore legal entity separate from its partner. Okay. Minimum of 5 can form it for any lawful business by signing the incorporation document. Incorporation document to be registered by the registrar, and it has to prepare annual accounts showing true and fair view of state of affairs. So the correct or I say the incorrect one out of these is option B, because a minimum of 2 people can lawfully form this business. ठीक है, 5 लोग नहीं, सिर्फ 2 लोग भी अगर हैं तो वो फॉर्म कर सकते हैं. सो 5 की जरूरत ही नहीं है, मिनिमम 2. Next we have is question number 79, which states the following statement is incorrect. 143A of NI Act talks about interim compensation to the complainant. ठीक है. 143A of NI Act is retrospective in effect. Compensation under this section cannot exceed 20% of the amount of check, and this was added by 2018 Amendment Act. So the only option which is incorrect is this, because it do not have retrospective effect. ठीक है, बाकी सब सही है. Which of the following is not to be done for the formation of a company? Memorandum of association, articles of association, formal dinner for SEBI, prospectus and allotment of securities. तो obvious है, डिनर की जरूरत नहीं है. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है ना तो आप कर सकते हो उनको. ठीक है. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. द कंपनी इज बाउंड to the members to observe and follow the articles. Every member of the company is entitled to an injunction to prevent the breach of articles of association. The company may be liable to any outsider by the provisions of these articles, and the articles of association regulate the right of the members. So the correct option for this question, that means the incorrect statement, is this. That company will not be liable to an outsider by the provisions of these articles. ठीक है. So the company may be liable to an outsider by the provisions of these articles. So अगर if a company is bound to the members to observe and follow the articles, and every member is entitled to an injunction to prevent such the breach, the company will not be liable to any outsider by the provisions of these articles. Okay, because they regulate the rights of the members, not the outsiders. Nemo det quod non habet means on the part of one side only. Assets distribution on a pro rata. No one can transfer a better title than he himself. He who acts through others act through himself. So the correct answer is no one can transfer a better title than he himself has. Next we have is question number 83. The statement international law is the finishing point of jurisprudence was given by none other than Holland. Question number 84. The source of international law is conventions, customs, general principles of law recognized by civilized nations. All of the above is the correct answer. States have a right to violate the rights of another state in the exercise of extending the boundaries, right of self-preservation, reclaiming disputed boundaries. All of the above. So option B is the correct answer. Question number 86. The following case was decided on the basis of India having ratified an international convention. So, Vishakha was a state of Rajasthan. कौन सा एक्ट आया था इसमें? Sexual harassment of women at workplace, है ना? Protection, prohibition, prevention. I may be आगे पीछे मैं बोल रही होंगी इनको, ठीक है? तो sexual harassment of women at workplace. Sexual harassment of women at workplace. Prevention, Prohibition and Protection Act. ठीक है. Next है हमारा Pacta sunt servanda, literally means international pacts must be honored, agreements must be kept, legal pact is above promise. Lastly, conventions are the first source. So the correct answer is option B. Question number 88, Just Coggins.
Just cogence is international law refers to preemptory norm from which no derogation is permitted, authority that establishes rule at first look or in its face, the law that is in force. तो ये तो prima facie होता है, ठीक है? At first look or in its face वाला तो. Opinio juris et necessitates means the jurist opinion is supreme. Action was carried out as a legal obligation. Evidence of a general practice accepted by law. Lastly, writing of the most highly qualified publicists. So C is the correct option. Next we have is the Covenant of the League of Nations came into existence as a result of Rome Treaty, Repaki Plan, Treaty of Versailles, and lastly UNCLOS. So the correct answer is option C. Question number 91. Every child marriage, whether solemnized before or after the Prohibition of Child Marriage Act, shall be voidable at the option of the contracting party who is a minor at the time of marriage. Which of the following statement is incorrect? Majority is pegged at 18 under this act. Petition to be filed before the child completes 2 years of attaining majority. The child bridegroom to file petition before completing age of 23. Child marriage is still a reality in the country. So option B is incorrect. Question number 92. Would a wife's insistence on not leaving her job to join her husband to a decree of divorce on a ground of desertion was an issue in which of the following cases? So the correct answer here is Chetan Kumar Amratlal Nayak versus Geeta Ben Kantilal Nayak. Question number 93 is non-resumption of cohabitation after decree of judicial separation or non-compliance of a decree for restitution of conjugal rights is a ground for divorce under which of the following acts? So the correct answer here is all of the above. So special marriage है पारसी का है या हिंदू मैरिज एक्ट का है, सब में, ठीक है, सब में it's a ground for divorce. Next is question number 94. Section 118 of the Succession Act, which restricts the manner of testamentary disposition of property among Christians, is violative of Article 14 of the Constitution, was decided in which of the following cases? So the correct answer here is option A, Mary Roy versus State of Kerala. Next is question number 95. The following is not a ground for divorce in Hindu Marriage Act. So cruelty, desertion, conversion to another religion, and irretrievable breakdown of marriage. Option D is the correct option. Answer. Question number 96. The following is not a valid condition for Hindu marriage. Neither party has a spouse living, the boy and girl to be 18 years, the parties are not spindas to each other, parties to be capable of giving a valid consent. So here option B is the correct option because this is not a valid condition. Although यहाँ this is a condition, but this is not a valid condition because जब हम लोग validity की बात करते हैं, ये क्या है हमारा, ये थोड़ा सा हमारे exempted है, ठीक है, इसके बेसिस पे validity को challenge नहीं किया जा सकता है एक marriage की. हाँ, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि अगर young है तो उनके पास remedy नहीं है, ठीक है, ये voidable है, but void नहीं है, ठीक है जी. The parameters for curative petition were laid in Rupa Ashok Hurra versus Ashok Hurra case. Next, we have question number 98. The following form of divorce under the Muslim law has been held unconstitutional. Talaq-e-Hasan, Hasan, Biddat, Ila and Zihar. So the correct option is Talaq-e-Biddat. Question number 99. The NHRC, National Human Rights Commission, does not take up cases on the following basis: individual complaints and suo motu action, intervening in court proceedings, court request to intervene, alternative dispute resolution. So ADR is the correct answer. Now the last question, that is Protection of Human Rights Act 1993 mandates the following for the post of chairperson of National Human Rights Commission: former CJI,
former Supreme Court judge, former Chief Justice of High Court, all of the above. So the correct answer here is option number B, former Supreme Court judges. देखो पहले यही ऑप्शन था, ठीक है, पर 2019 में क्या, 2019 में हुई हमारी अमेंडमेंट, ठीक है, जिसके बाद हमारा ये बन गया, सुप्रीम कोर्ट का जज है अगर मेरे फॉर्मर, तो वो चेयरपर्सन के लिए एलिजिबल है। पहले क्या होता था कि चीफ जस्टिस होना चाहिए इंडिया का, तभी वो चेयरपर्सन बन सकता है। बट अभी ऐसा है कि चाहे वो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे ना, चाहे वो चीफ जस्टिस नहीं, मेनली सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, देन ऑल्सो दे आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ NHRC. So this was all about HPU LLM entrance question paper of the year 2019. Now next video will be on question paper of the year 2020. So thank you so much and stay tuned for more videos.